रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 34वें प्रोग्राम में साजिद अवान का सलाम कबूल कीजिए। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी ताख़ीर की माजरत। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम में शमूलियत के साथ साथ आप इस प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि जो लोग मज़ीद इसमें शामिल होना चाहें वो हमारे साथ शामिल हो सकें। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमने ये प्रोग्राम आजकल जिस फेज में चल रहे थे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी चल रहा था। तो उसमें ये था कि अब इसका 34वां प्रोग्राम है। देखिए, पॉलिटिकली तो हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एंड ऑफ ब्रिटिश रूल तक इसे कवर कर लिया। अब ये वाला प्रोग्राम हम इससे पहले कि हम यूरोपियन हिस्ट्री पे जाएं, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा कल्चरल डिस्कोर्स में आए पाकिस्तान के हवाले से। तो इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम का जो उन्वान रखा वो रखा कि पाकिस्तानी कल्चर एंड कल्चरल नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान और कल्चरल नैरेटिव ऑफ द स्टेट क्या है, क्या होना चाहिए और कैसे है। हस्ब मामूल जर्मनी से प्रोफेसर एमरेटस असलम सैयद साहब हमारे साथ शामिल हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं तहे दिल से। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर। थैंक यू। आपने हमारी ये दरख्वास्त भी कबूल की कि इसे कल्चरल नैरेटिव की तरफ लेके आया जाए। आपने जी, सर चूंकि पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी बनाई थी किसी दौर में, आपका जी। तारीख के साथ साथ कल्चर पे और कल्चर एंड हिस्ट्री पे भी एक खास नुक्ता नज़र है। तो सर, हम ये चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम हम पाकिस्तानी सकाफत और जो हमारा सकाफती बयानिया है उस पे करें। तो सर, आपसे दरख्वास्त, वैसे तो हम कल्चर की बहुत सारी तारीफें सुनते पढ़ते रहते हैं। मैं आपसे चाहूंगा सर कि आप कल्चर को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं और किस तरह से बयान करते हैं सर। इसके जी, बाद पाकिस्तानी कल्चर पे आते हैं। सर, पहले अमूमी जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि आप श्योर, कल्चर से क्या मुराद लेते हैं सर। श्योर। It should not be surprising to anybody because सर, without understanding a culture of any society, you या cannot understand the history of that part of the world. या तो जब मुझे कहा गया कि जी आपने कल्चरल पॉलिसी लिखनी है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की थी, तो उसमें द वे आई डिफाइंड कल्चर वाज ह्यूमन इंटरैक्शन विद नेचर एंड हिस्ट्री। अब मैं आता हूँ गुड इसकी तरफ। सर। Two elements, if you understand: सर, human interaction with nature. Nature सर, means the place where these people live, what kind of land they have, is there enough water, is it closer to the river, is it in desert, mountains, on the coastal area. All those resources that are available to human beings to survive, सर, that is the first brick of culture. पहली ईंट, पहली बुनियाद जो कल्चर सर, की होती है, वो उन ज़राए की मदद से होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इख्तियार करता है। दूसरा होता है तरीका, जब उसकी दूसरे इंसानों के साथ मुलाकात होती है, मैदान जंग में, तिजारती मंडी में, मेले खेले, किसी जगह, कोई भी ओकेजन हो, किसी हुक्मरान के दरबार में हो। अमूमन लोग कहते हैं कि जंग मैदान में सबसे ज्यादा इंसान एक दूसरे के कल्चर से सीखता है। ये दो एलिमेंट्स अगर आप जहन में रखें तो किसी भी एरिया का कल्चर समझना आसान हो जाता है। और फिर जिस वक्त हमें हैरत होती है कुछ लोगों की आदात पे, तो वो हैरत भी नहीं होगी आपको जब आपको पता चलेगा कि जिस इलाके में ये रहते हैं उस इलाके की आबो हवा क्या थी, बूदोबाश क्या थी। तो इस पे सबसे पहले एंटिक्विटी में कम मैंने देखी हैं कोई ऐसी तहरीरें जो इस लिहाज से लिखी गई हों, लेकिन मसूदी हमें पहला नजर आता है मुअर्रिख, जिसने मरूजुज़ ज़हब जो उसकी किताब है उसमें उसने
इसका हवाला ख़ास तौर पे लिया है कि आबो-हवा किस तरह इंसानी किरदार पे असरअंदाज होती है, और उसके साथ उसने टेम्परेचर का ज़िक्र किया है, सूरज की तपिश का ज़िक्र किया है, बहुत से ऐसे अवामिल का ज़िक्र किया है, जो इंसानी ज़िंदगी की पे असरअंदाज होते हैं। उसके बाद इसको डिवेल्प्ड फॉर्म में इब्न खल्दून ने पेश किया है। वो थोड़ा-सा जज़्बाती हो गया है इसमें इब्न खल्दून के he said that all desert all cultures they start from deserts. ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि वो खुद एक डेज़र्ट का उसके पेरेंट्स आए थे यमन से, वहाँ का बाशिंदा था, तो इसलिए उसने डेज़र्ट को एक तरह से ग्लोरीफाई किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। फिर हम आएँगे पाकिस्तान के कल्चर की तरफ। जी, श्योर। डेज़र्ट को देखिए कि जो लोग डेज़र्ट में रहते हैं, उनके एनवायरनमेंट क्या है? उनके और आसमान के दरमियान कोई चीज़ नहीं है। कोई दरख्त नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं। एक वॉइड है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मल्लाह समुंदर में जब तैर रहा है या अपनी कश्ती चला रहा है, उसके और आसमान के दरमियान कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसा वजूद किसी चीज़ का नहीं है जो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करे, या उसकी नज़र ऊपर होती है या जहाँ पे वो मौजूद है, ख़्वाह वो पानी है या वो रेतला इलाका है। तो कहा जाता है अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर जितना कुर्ब इन 2 जगहों पे होता है इंसान को, उतना और कहीं नहीं होता। तो एक नज़रिया ये भी है कि ये जो तसव्वुर है एक अल्लाह ताला का, जिसको हम तौहीद कहते हैं, या तसव्वुर है कि ये हमारी जो असल है वो वही है ऊपर तक। ये उस वॉइड में आती है जिसमें आपकी अटेंशन कोई और चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सके। ये तो मैंने आइडियाज़ की बात की है। ठीक हुआ। अब दूसरी तरफ ये है कि यहाँ-वहाँ खाने को क्या मिलता है इनको? डेज़र्ट में कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ़ चंद गिने-चुने जानवर ही सर्वाइव कर सकते हैं। भैंसें वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकती, गाय नहीं सर्वाइव कर सकती, बकरियाँ कर सकती हैं, ऊँट कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप डेज़र्ट के लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये 2 जानवर ही आपको नज़र आएँगे, जो ज़्यादा उन्होंने डोमेस्टिकेट किए होते थे। पानी बहुत कम होता है, तो इसलिए जो एनिमल वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऊँट, without water it can survive for many days. And it is the capacity to store water also, which people in dire needs they drink by poking a hole in one of the sensitive areas of the camel. These things determine their habits. They determine their dealing with the other people also. क्या करते हैं फिर ये? What should they do? What is the most important, the most valuable thing for them? वो कहते हैं ना कि पानी के झगड़ों पे मार कुटाइयाँ हो जाती थी। पानी उनके लिए ऐसा ही था जैसे हमारे लिए ज़मीन है पंजाब के लोगों के लिए। पानी का कुआँ इतना ही उनके लिए कदर कीमत का हामिल था जितनी कोई और चीज़ हमारे दूसरे लोगों के लिए होती है। It was a property, very valuable property. तो अगर किसी को झगड़ा होता है पानी पे, हमें हैरत होती है बाज़ औक़ात के हैं पानी पे लोग झगड़ते हैं, इसलिए कि हमें एहसास नहीं, तसव्वुर नहीं कि पानी कितना कीमती होता है उस इलाके में जहाँ पानी नहीं है। दूसरी बात, खाने के लिए क्या पैदा होता है वहाँ पे? खजूर का दरख्त पैदा होता है। गंदम आप काश्त नहीं कर सकते, चावल काश्त नहीं कर सकते। अगर ज़मीन ही अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो कुछ भी नहीं काश्त हो सकता।
अब जो वाइल्ड ग्रोथ के पौधे हैं उनमें, जैसे यमन में बात एहसास नहीं तो सब ये कॉफी बीन्स इसी तरह दरियाफ्त हुए कि ये वाइल्ड ग्रोथ थी इसकी। या हमारे यहाँ पे करीर का पौधा बहुत मशहूर है, तो उसके बनते हैं, उसकी छोटे छोटे दाने होते हैं जो उनको लोग खाने में या अचार में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़हन में रखें अगर आप कि वहाँ पैदा क्या होता है। लोग तिजारत करेंगे या लूट मार करेंगे, ये दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर कोई रास्ता ऐसा है जो उस इलाके में से गुजरता है, अव्वल तो डेजर्ट्स में से कम ही होते थे इलाके, लेकिन अगर होता था तो वहां पे लोगों को खतरा होता था कि यहाँ पे कोई खड़ा होगा, हमारा इंतजार कर रहा होगा, हमारा सामान लूटेगा या कुछ और करेगा। तो ये जितना मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ डेजर्ट के लोगों की, ये बुनियादी तौर पे वो पैदा होते हुए नहीं लेके आते, ये उनके एनवायरनमेंट उनको सिखाते हैं। अब हम चलते हैं टू द वर्ड्स द पीपल हु लिव ऑन द हाईलैंड्स। सर, पहाड़ों में रहने वाले लोग, जी सर, बहुत कम स्ट्रिप्स होते हैं जमीन के जहां पे वो कुछ कल्टीवेट करें, लेकिन जो होते हैं उन पे कितनी मेहनत करते हैं। जो आप देखिए जाके गिलगित चित्राल और इन लोगों में और स्वात के लोगों में आपको देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि छोटी छोटी पट्टियां हैं जमीन की जो उन्होंने इस लायक की हैं कि वहां थोड़ा बहुत अपना कुछ पैदा कर सकें। फिर पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना उनकी डेली रूटीन है। उनके जिस्म पे उसके असरात नजर आते हैं। कोहस्तानी बच्चा हम अक्सर कहते हैं इन लोगों को कि इनकी आदत भी तकरीबन वैसे ही सख्त होती हैं। ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी जो लोग रहते हैं ऊंचे इलाकों में। उसके बाद आ जाइए आप मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाके खुले होते हैं, दरख्त होते हैं, खेत होते हैं, और अगर दरिया है तो वो पानी फराहम करता है। यहाँ का जो कल्चर है, इन इलाकों का कल्चर, उसकी जमीन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक हो जाता है। जमीन उसको सस्टेन करती है। तो जमीन को वो, आप पूछ लें किसी अपने जो वाकई पंजाब के कल्चर से वाकिफ हो, बताएगा, वो कहेगा बेटा जमीन तो माँ की तरह होती है। जमीन की क्यों इतनी तकरीम, क्यों इतनी इज्जत करते हैं कि ये टुकड़ा जमीन का एक तो मेटाफोरिकली है कि हम जमीन से बने हैं और जमीन में जाएंगे, लेकिन जिन इलाकों में पैदावार जमीन अच्छी देती है वो सस्टेनेंस का है जरिया जमीन। इसलिए जमीन की हिफाजत आपको करनी होती है हर तरह से, हर लिहाज से। ये नहीं कि आप खाना बदोशों की तरह उठ के एक जगह से दूसरी जगह, नहीं, वो आपकी परमानेंट रेजिडेंस होती है। अब परमानेंट रेजिडेंस जो होती है वो अगर थ्रेटन हो जाए तो आप क्या करते हैं? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप आगे से लड़ें, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो वो लड़ाई करने आया आपके साथ, जो वो कहता है उसकी बात मान लें, और अगर वो गुजरना चाहता है तो उसको आराम से गुजरने दें, क्योंकि आप वो जगह नहीं छोड़ना चाहते। वही हमला अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा। उनको उस जमीन से कोई लगाव नहीं है। वहां खैमे वहां से उठाएंगे, कहीं और लेके चले जाएंगे, तो उनका बिहेवियर, उनका डीलिंग टुवर्ड्स दीज इन्वेडर्स विल बी टोटली डिफरेंट। ये आपको पता है, आपकी तारीख में अक्सर ये सवाल आते हैं कि इस इलाके के लोगों ने हमलावरों के साथ ये किया, उस इलाके के लोग तो उनको कहते हैं बड़े बहादुर थे, उनकी जरूरत नहीं थी कि उस इलाके से गुजर सकते। पहली बात तो ये कि जो हमलावर होगा वो किसी ऐसे इलाके से क्यों आएगा जहाँ उसकी फौज के सिपाही भूखे मर जाएं, उनको पानी ना मिले, कुछ खाने को ना मिले, तो वो उसी रास्ते से आएगा जहाँ से वो ये तमाम चीजें अवेलेबल हों।
दूसरी बात, उनकी अटैचमेंट अपनी ज़मीन के साथ उतनी नहीं होती, जितनी इन लोगों की होती है, जिनकी ज़मीनें ज़रख़ेज़ होती हैं और उनको सस्टेनेंस का ज़रिया देती हैं। अच्छा, इसी तरह आप देख लीजिए, साहिली इलाकों के लोग जो हैं, मैं बड़ा मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि इस पे तो बड़े सेशंस जी, कर बहुत, सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब साहिल के लोग जो हैं, उनका ज़रिया मुआश क्या होता है? कश्तियाँ के बगैर वो गुज़ारा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। कश्ती बनाने के साथ, जाल बनाने के साथ एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरा क्राफ्ट और आर्ट का निज़ाम दरकार है। बिल्कुल फिर ठीक। मछलियाँ पकड़ने का तरीका, ये तमाम चीज़ें उनकी इकोनॉमी को, ये उनका जो प्रोफ़ेशन है वो शेप करता है। इस लिहाज से उनकी आदात, उनका रहन-सहन का तरीका, वो तमाम मुख्तलिफ होगा। उनको भी अगर आप कहेंगे कि वो थ्रेटन करने आएँगे, तो वो साहिल से उस जगह से हट के कहीं और बैठेंगे, क्योंकि उनकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम उस जगह से नहीं है, जिस जगह पे वो रहते हैं। हुँ। पहला, अब आप, मेरा ख़्याल समझ जी, आ जी। गई है फर्स्ट जी, पार्ट। बिल्कुल। जी, जी। Various societies, how do they negotiate with the area in which they live? जी हाँ, How their sources of production or modes of production बिल्कुल shape ठीक। their culture, shape their lives, shape their जी, जी। attitudes towards other people. ठीक हो। ठीक होगी बात? अब बिल्कुल हम ठीक, सर। दूसरी बात की तरफ आते हैं, इंटरेक्शन विद हिस्ट्री। जी, सर। हिस्ट्री से मुराद ये है, मैंने 2-3 मिसाल आपको दी, तिजारत करते हैं आप। सर। तिजारत वो करता है जिसको, अगर कोई पंजाब में शख्स है, उसके पास सब कुछ है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको ज़रूरत उस वक़्त पड़ेगी जब उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसके इलाके में नहीं होती। आप समझे ये बात? जी सर, बिल्कुल। कॉटन होती है वहाँ, कपड़ा भी उसके पास है। बिल्कुल ठीक। गंदम, हर चीज़ उसको मौजूद है। बिल्कुल सही। उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं होगी। जो सहरा में रहते हैं लोग, डेज़र्ट में, उनको खाने की ज़रूरत होगी, उनको कपड़े की ज़रूरत होगी। वो आएँगे इनसे बिल्कुल सही। तिजारत करने के लिए, और उनके चूँकि हुँ, अपने इलाके में कुछ नहीं होता, तो वो देखेंगे आके कि इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ हम इनको बेच सकते हैं। वो फिर हुँ, एक्सप्लोर करेंगे कि अगली दफ़ा जब हम लाहौर जाएँगे तिजारत करने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ एक, तो जी, पेशावर जी। से या कोयटा से कौन-सी चीज़ उनके लिए लेके जाएँ, जो वहाँ नहीं है, ताकि हुँ, हम बेच सकें। बिल तो इसलिए बिल्कुल अगर सही। आप अरब ताजरों के देखें हालात, तो वो हुँ, कुरान शरीफ में भी है, सूरह कुरैश में, "एरे ला तशताए जी, वस्सहब" से, कि सर्दियों में तुम लोग उधर जाते थे, गर्मियों में तुम लोग उधर जाते थे। रस्तों की अल्लाह ताला ने निशानदेही की है। वो इसलिए कि सर्दियों में वहाँ क्या होता था, गर्मियों में वहाँ क्या होता था, कौन-सी चीज़ उनको चाहिए थी, कौन-सी ये लेके जाते थे और कौन-सी वहाँ से लेके आते थे। एक तो ये है हुँ, ह्यूमन इंटरैक्शन। दूसरा ह्यूमन ठीक हो गया। इंटरैक्शन होता है वॉर्स के ज़रिए। इस इलाके पे कब्ज़ा करने बिल्कुल। आते हैं हम लोग। हुँ, तो वो, दे विल हैव टफ टाइम इन डेज़र्ट। हुँ, पहले तो डेज़र्ट पे हमला करने कोई नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिए आप। ठीक हुआ। हमलावर उसी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे उनको कुछ उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिलेगा। हुँ, सहरा में उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप पूरी दुनिया की हुँ, तारीख उठा के देख लें, हुँ, सहरा पे हमले नहीं हुए, सहरा से हमले हुए हैं, ठीक सेटल्ड। हुआ। ये आप नॉर्थ अफ्रीका की हिस्ट्री देख लीजिए आप। आप ये सिंध बलूचिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए। आप देख लीजिए कि जो लोग आए हैं, बलोच इतने ज़्यादा सिंध में क्यों आबाद हुए हैं? सिंधी इतने ज़्यादा हुँ, बलूचिस्तान में क्यों नहीं आबाद हुए? उसकी सिर्फ़ ये वजह थी कि सिंधियों को ज़रूरत नहीं थी वहाँ से जाने की, उनके पास सब कुछ था। बलोचों को ज़रूरत थी वहाँ आने की। ठीक हुआ। अच्छा, यही आपको सिंधी कल्चर में नज़र आएगी, जो जिसको हम कहते हैं ना कामनेस एंड पैसिफिसिटी, कि वो लोग जी, बड़े जी। हैं, वो उसकी वजह सिर्फ़ यही है।
देयर अटैचमेंट टू द लैंड, उनको पता है कि दोनों तरफ डेजर्ट्स हैं उनके, ईस्ट में भी वेस्ट में भी, तो उनको पता है कि क्या वैल्यू है इस इलाके की जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और क्या इस वाटर चैनल की, जिसको इंडस कहते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे नजर। तो लव लैंड, जिसको हम किसी हद तक इनिशियल लैंग्वेज में पेट्रियोटिज्म का नाम देते हैं, अपने देश से, अपनी जगह से मोहब्बत, ये ज्यादा होती है उस वक्त जब आपको पता है कि आपकी जिंदगी का दारोमदार उसी इलाके पे है जिस पे आप रहते हैं। वहां के दरख्त, वहां के पौधे, वहां का पानी, वहां की आबो हवा, ये तमाम चीजें आपको नरिश करती हैं। दैट डिटरमिन्स योर एटीट्यूड। वार्स में एक और चीज हम सीखते हैं दूसरों से, वो होता है कि अगर छोटा सा कोई ग्रुप आके बड़े ग्रुप को डिफीट कर देता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और अक्सर जितनी भी ये डायनेस्टी जो हमने भी पढ़ी हैं, वो अगर आप देखें तो उनकी तादाद बहुत कम थी उन लोगों की निस्बत जिनको उन्होंने डिफीट किया। खा वो तुर्क थे, खा वो मुगल थे, खा वो अंग्रेज थे, थोड़ी तादाद में लोग आते थे, ज्यादा लोगों को शिकस्त देते थे। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है तारिक बिन ज़ियाद की, कितने लोग लेके गया था स्पेन में और कैसे किया, उसकी दो वजूहात लोगों ने नोट की। एक तो नोट की जिसको बाद में लोगों ने कहा कि दे हैव बर्न्ड देयर बोट्स, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो अब फैसला करके आए हैं कि या मरेंगे या यहीं रहेंगे। तो उनमें फिर वो जो इमोशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं लड़ाई झगड़े के, वो दूसरों की निस्बत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज होती है डिसिप्लिन, या जो वो असला लेके आए हैं, जो साजो सामान लेके आए हैं। एक तरफ आप हाथियों पे चढ़ के मुकाबला करते हैं, या जैसे हमें नजर आता है पुरानी अगर आप देखें तारीखें, बुद्धा प्रकाश ने बड़ी खूबसूरत की है निशानदही इस तरफ कि इंडिया में घोड़े नहीं होते थे, तो लड़ते किस पे थे, भैंसों पे बैठ के डंडे हाथ में पकड़ के उस पे लड़ाई करने जाते थे लोग। ये तरीका इंसान ने इख्तियार किया हुआ है शुरू से, जो कुछ आपके पास है उससे आप लड़ते हैं। रोमनों ने कभी भी अपनी जिंदगी में ऊंट नहीं देखे थे लड़ाई के मैदान में। एक मशहूर था, एक ऐसे ही एक बात मशहूर थी अरब में कि अगर कोई ऊंट पे आ रहा है तो वो सुलाजू है, अगर कोई घोड़े पे आ रहा है तो उसके इरादे कुछ और हैं। लेकिन इन्होंने बकायदा एक, जिस तरह कैवलरी होती है, कैवलरी कहते हैं ना घुड़सवार फौज को, जी जी बिल्कुल, इसी तरह कैमलरी थी, कैमल्स की फौज, कैमल्स पे सवार लोग जाते थे। ये जो ट्राइब है भरत, जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा, ये अक्सर भैंसों के ऊपर बैठ के लड़ाई लड़ते थे दूसरों के साथ। तो ये फिर बाद में हमें पोरस का पता चलता है कि उसके हाथी, हाँ जी, हाथी और घोड़े का कोई मुकाबला नहीं है मैदानी जंग में, जो फुर्तीला घोड़ा है। फिर ये जो नस्ल थी जो ज्यादा अरब में, अरबों ने उसको इस्तेमाल किया है, जिसको हम अरेबियन हॉर्स कहते हैं। जी सर। इस घोड़े जितना एथलेटिक घोड़ा नहीं है दुनिया में कोई, जिस तरह वो मुड़ता है, जिस तरह वो तेजी दिखाता है, अपने आप को बचाता है, अपने सवार को बताता है, उसमें गोश्त कम होता है, उसमें मसल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके कल्चर को, आपकी लव विद हॉर्सेस, विद एनिमल्स, विद सर्टेन ट्रीज, विद सर्टेन क्रॉप्स, ये आपको बढ़ाती हैं और यही आपका कल्चर जो है ये शेप करती है। तो ये बहुत मुख्तसरन मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत मुख्तसरन एलिमेंट्स इंसानी कल्चर को शेप देते हैं। दो तरीकों से याद रखिए ये डेफिनेशन,
कि बिल्कुल कल्चर ठीक। ह्यूमन इंटरेक्शन विद हिस्ट्री एंड नेचर, बल्कि आई विल पुट नेचर बिफोर, विद नेचर एंड हिस्ट्री। ये जिस किसी ग्रुप को उठा के देख लें, उसके कल्चर को स्टडी करना शुरू कर दें, यू विल सी दीज टू थ्रेड्स कमिंग टुगेदर। अब हम आते हैं हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जी सर। उसके कल्चर पे, उसकी सकाफत पे। ठीक सर। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां दोनों लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन विद हिस्ट्री, इतनी वैरायटी हो जितनी इस खित्ता-ए अर्ज में है। ठीक हुआ। आप ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर देख लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, हाईलैंड्स K2 से शुरू कीजिए, जैकबाबाद तक आएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आई एम इन द सेम कंट्री। आप ऊंचे पहाड़ों से, बर्फ के ढके हुए पहाड़ों से, वहां के पौधे क्या हैं, वहां का लोग एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, लोगों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, जानवर कौन से पालते हैं, वहां से आप नीचे आए तो आपको ये एरिया नजर आता है जिसको हम प्लेटो कहते हैं, सतह मुर्तफा जिसको उर्दू में कहते हैं। ये भी हाईलैंड्स हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। इनको, इनके लोगों को हम पहाड़ी लोग कहते हैं। यहाँ पे जो गीत जन्म लेते हैं उनका एक बड़ा मशहूर राग पहाड़ी राग बन गया। ये इलाके इसी तरह, ये तो मैंने अभी चंद बातें की। अगर आप देखें कि इलाकों का म्यूजिक पे क्या असर होता है, जो आप लिबास पहनते हैं, लिबास के रंगों पे क्या असर होता है, लिबास की बनावट पे, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो literally needs a lot of sessions on how human cultures are shaped or are formed. फिर आप आ जाइए आगे पंजाब में। दुनिया की मेरे ख्याल ये वाहिद एरिया है जहाँ पे ये 5 दरिया इंसान के हाथों की उंगलियों की तरह आपको नजर आती हैं। में दरियाओं के दरमियान दोआबा है और उसकी लैंड की फर्टिलिटी, लोगों का कल्चर, इट इज ऑल शेप्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, दरिया इतने बहुतात में होने के बावजूद फिश इज ईटन बट नॉट as common as the people in the coastal areas eat. वजह ये है कि उनके पास और बड़ी चीजें हैं खाने के लिए। फिर आप नीचे आ जाएं तो नीचे आके फिर बाइफरकेट हो जाता है आपका कंट्री। एक हिस्सा ड्राई है लेकिन है उसमें वेजिटेशन। इसमें कुछ बहावलपुर के हिस्से आते हैं, कुछ सिंध के हिस्से आते हैं, कुछ पार्ट आता है बलूचिस्तान का भी। अक्सर आपको डेजर्ट नजर आता है। ऊपर वाले पहाड़ आपको बिल्कुल ग्रीन नजर आते हैं, नीचे वाले बिल्कुल आपको ब्राउन रॉकी नजर आते हैं। Then you have a huge, quite a vast area of coastal areas. Coastal areas में फिर आपको वहां का कल्चर नजर आता है। तो एक मुल्क में इतनी वैरायटी में नेचर ने शेप किया है इंसानों का कल्चर कि हैरत होती है। अब आइए आप इंटरेक्शन विद हिस्ट्री। ठीक हुआ। हिस्ट्री में कॉन्टैक्ट विद द चाइनीज पीपल, कॉन्टैक्ट विद द साउथ एशियन पीपल, कॉन्टैक्ट विद द इरानियंस, कॉन्टैक्ट विद द अरब्स, कॉन्टैक्ट विद द ग्रीक्स, later on contacts with the Portuguese, with the French and the British, lately with the Americans. तो आप मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा खित्ता है जो बचा है जिनके साथ आपका हिस्टोरिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ। मकरान के साहिल पे देखें तो आपको वहां अफ्रीकी नस्ल के लोग नजर आएंगे। वो कैसे वहां पहुंचे? ओमान के जरिए आए, गुलामों की ट्रेड से आए,
माइग्रेशन करके आए, these are all questions for the researchers to note down. ये आ गया आपका ह्यूमन इंटरेक्शन। अब जैसे हमने पहले भी एक दो दफा जिक्र किया इस बात का, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ आप पॉइंट आउट करेंगे दुनिया में? ठीक है, we know Mesopotamian civilization, we know Egyptian, we know Chinese, we know Indian. But so far, Mohenjo-daro and even before that, Mehrgarh, these two spots have not been beaten by any cultural spot in the world. They stand out not just as the oldest cradles of civilization, I don't mind calling it, like people, archaeologists call it Harappan civilization. आप कल्चर कह लें इसको, जो मर्जी कह लें, लेकिन इतना हाईली डेवलप्ड कल्चर, अर्बन कल्चर, with houses made of bricks, with water available even on the second floor, ये कहीं नहीं दुनिया में हमें नजर आता। अब लोगों ने इस पे लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मिस्ट्री है वो ये है कि how come they had achieved such a scale of development far more superior than anywhere else in the world. That is a big question mark, something for the scholars and researchers in this field to investigate. Now we come to another aspect. This interaction with history is done in many ways. When Iranians came here, they introduced their system either through direct or through indirect interaction with the local people. Herodotus mentions soldiers from Punjab fighting in Greece. They went with the forces of Iranian rulers. तो आप देखिए एक्सपोयर, अच्छा उसने लिखा है कि how did I recognize these people that they were not from other parts of the Iran? Because later on when he comes and visits this area, he realizes, oh, that I have seen this dress amongst the soldiers of Iran who went to fight against the Greeks. दूसरा होता है जो ideas, because these people who we interact with, they also bring ideas. Ideas in the sense that if they stay there, then we get to know them. In terms of ideas, आप देख लीजिए, आप religion से देख लीजिए, ये जो area है called Pakistan, we see so far scholars have not been able to identify whether the people of Harappan civilization followed any religion or not, whether they had any fighting skills or not. They have not been able to discover any weapons or anything like that. They have been able to discover the fact that people were very clean, they knew how to store grain, they knew how to dress up nicely, they knew how to sell their goods, and they had their distinct stamps and trademarks which they used for sale and for purchase. They have not been able to decipher the script so far. We leave that. I'm sure you are familiar with these ancient Indian stories of Mahabharata, etc.
Go around in the territory of Pakistan, you will find so many areas called Sita Kund. बिल्कुल. There is one near Khanewal, and this is Yeah. still there was a forest when I saw it. It is called Sita Kund. Professor Cyprian discovered two more. One was in the area where you have Sialkot and Wazirabad, these areas, and the other one near River Chenab. All right. That gives us an idea that this story, which gave shape to India's culture, took place in this area, which is today Pakistan. So later on, what we came to be known as the Hindu religion had its roots in this area. And if you look at the language, Sanskrit, we don't know where it developed, but the first book of its grammar was written in today's Pakistan, in Taxila. Yes, sir. Similarly, the first book about what should the rulers do was also written there. So, this area, which is Taxila, gives you the first university, it gives you the first system of governance, it gives you the first book in the world on grammar. I'm referring to Panini. I'm sure you know this. Yeah, I got it, sir. So, in other words, this has been the cradle. Even if we start from no religion and come Yes, to sir. Indian religion, this has been the cradle of Indian religion. Then comes Buddha. Buddha was born in that area, which is not in Pakistan. But amazingly, the caste system was so strong in India at that time that they pushed the followers of Buddha out of mainland on both sides, Sir. which later on become one of the reasons why East India and West India, they were more receptive of Islam than any other religion. Sir. That we will cover later on. Most of these Buddhists, they came to this area, which is Pakistan today. From there, they went to Afghanistan, to Central Asia, even up to China. And from here, wherever Indus, Sindh, down to Sri Lanka. So this became not only a center of Buddhist, but also a training center of Buddhism. If you look at some of the rock carvings and rock edicts of Ashoka, Yes, sir. in Mansehra, in Swat, and many other areas of northern Pakistan, you will see that this place must have been the center of Buddhist teachings, and Buddhists flourished in this area. Many stupas, if you go to Swat, you will see that even in the fields, you will see stupas. So that is the third layer of cultural legacy of Pakistan. I used to talk to people as a student, old people, who in our language were illiterate. But in the language of wisdom, they would tell you things. Later on, I started collecting their sayings. And when I studied a little bit of Buddhism, I came to know that most of what they were saying were sayings of Buddha. They were repeating without knowing who the author is. But we have this amazing capacity, South Asians, to retain what is told us. Somebody asked me, I think it was at Harvard, we were giving this lecture of oral transmissions of traditions. So they asked me this question, that why was not music written like music was written in the West? So I said two reasons I could think of. One, if music is written, it ends the innovative skills of the singer. Because the singer will have to follow the notes that are described in the notebook.
he cannot use his own while saying within that note, he cannot do anything to it. Whereas development of anything is that if you keep adding, and if you keep adding, then one raga gives birth to so many ragas and raganis. That was one thing. Secondly, a retention of the ideas that were given. When we were students, we were asked to memorize these tables. We were supposed to memorize. If you would show it to teacher that I have written it, said, no, I want you to repeat it. So there were some disadvantages because we started memorizing everything. But the advantage part was that people retained these ideas in their memory and passed on to the other generation. Yes, sir. Then came the Greeks. Sir. They brought their own culture in this area. And then we had the diffusion of these two. We had a wonderful civilization called Gandhara civilization. And that is nowhere else in the world you will see Buddhism, Greeks ideas, and the ideas from the soil, they came together. The best examples are again in Texla Museum, and you will see that how these three trends of culture, they come together. Great. Then after that come Chinese people. Chinese people come. We have covered that area. Then come Muslims. And Muslims come from three main areas. Is what we call Islam is actually an umbrella under which we put Central Asian Muslims, Iranian Muslims, and Arab Muslims. What the Arabs brought to Sindh was not the same thing that Turks brought to northern Pakistan or Iranian brought to central Pakistan. These were different versions. From literal desert Quran to urbanized, mystical, metaphorical, philosophical Islam to hardcore, matter-of-fact, politically minded Muslims who came in the shape of Turks and Moguls. These three strands you will still find in the culture of Pakistan. Then we have finally the British coming to this area. They also left their cultural traits because, as I told you, history. You can revise it, you can repeat it, you can deny it, but you cannot eliminate the impact of history on your thinking or on your culture. They left their imprints on almost every aspect of our life. Our eating habits, our sports, our dresses, even on our language, on our institutions, whether they were educational, even on our religious institutions. They left an impact. Now, just to gauge how much cultural heritage, how many streams of cultural beauties they flow into this part of the world. And how much of that our official narrative entertains, how much of that we deny, how much of that we hide. You see, the problem is that we cannot. This is one part of the world that we cannot do that. There is a very famous saying that there was this great scholar, Jahiz. I think I don't know if I've told this on this forum, this story before or not. Yes, sir. He falls in love with an Arab girl
and he is excellent in Arabic. He is not an Arab, but and the only condition that that girl's father has is that she will marry only an Arab. So he presents himself, doesn't say that he's not an Arab, but his Arabic language, his command over idioms, and his mannerism is perfect, and she agrees. He was very fond of reading and writing, and he had a huge library. So often he would be buried in the books, and his wife would be calling him that, now stop it, come, it's time to go to sleep. One day, after 10 years, he told her that you go to sleep and put the light off. Now, the word that he used for putting the light off, Arabs don't say that. He said it in Arabic, but it was translation of an Iranian term. And that woman just came back to him and said, you are not an Arab. He said, why? He said, no Arab will say this word the way you have said it. So that shows that culture shows up. You cannot disown your culture. No matter how much you transform yourself, how much you change. The impact of the soil and the environment has a very long life, and at one point or the other, it will reveal itself. So culture of Pakistan is actually shaped by 1,000 years of our interaction with other human beings, with other religions, with other ideas, with different environment, with different and varied sources of nature, different modes of production. All these we keep into mind, and then emerges a composite culture where you will have the aroma, the sounds and colors of almost all these things that I have mentioned. And the question that remains always is that, are we strong enough to carry this burden on our shoulders? And if we are doing that, are we proud of that? Whether you are apologetic or your shoulders are weak, it doesn't matter. If you cannot say, the people looking at you will say that, oh, this fellow is, yeah, my God, what a rich cultural heritage they have. And look at them, how much of that they are manifesting, how much of that they are hiding, how much of that they are apologizing about. So this land of Pakistan has, essentially because of its topography, because of its resources, and because of amazing interaction with history, has produced a beautiful mixture, amalgamation of ideas, habits. That's what makes it, in my view, more attractive than any place else in the world. And if you want to dissect it further, just an idea, because you are running an institute which is not just history, it's culture also.
Sometimes, see, it shows in music also. Look at the cultural notes in compositions. Essentially, it is shown not in classical music, in folk music. It is shown, you will see that this is, oh, this must be from Chitral, this must be from Gilgit, from Baltistan. Oh, I know this is from Khatak area. Oh, this is from Quetta. This has to be from Kharan. This has to be from Sindh. This has to be from Bhit Shah. This has to be from Khaja Ghulam Farid's Kafi. This has to be from Dera Ghazi Khan. This has to be from Bahawalpur. Why do we point out all these areas? Because this is further dissection of these cultural beauties. So multiculturalism is something we crave for, because there is no monotony there. And here we have this land which is so rich in culture, but since we do not study culture, our historical narratives are half-baked. We show our amazement rather than appreciation on certain things. I'm not talking about those aspects of our lives which we do in the name of culture. That is totally different. Don't misunderstand me. Right, sir. If we do something bad and we say this is our culture, then you have to show me evidence of that thing happening before also, which did not happen before. So all these recent things that we do and we say this is the culture of that area, that is a lot of absurdity in that, nonsense. We hide our crimes under this cultural panorama, which is absurd, which is wrong. So the reason I am saying this is that many people will perhaps say that it means whatever we do in the name of culture is justified. No. Real culture and hybrid culture, these are two different things. Or hiding again under this cultural canopies is something totally different. So this is, I think this is where I will stop. And if you have any questions or questions of our viewers, so I'll be very happy to answer that. सर बहुत शुक्रिया. क्वेश्चंस तो सर बहुत सारे हैं. टाइम असल में हमारा क्लोज आ गया, लेकिन एक्चुअली हमने सर इसे, जैसे आपने फरमाया, हमने इसे इसीलिए कल्चरल पर्सपेक्टिव में जरा देखा कि एक तो सर ये कि जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं ही कल्चरल ग्राउंड्स पे कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट दिस, डिफरेंट दैट. एक तो सर ये, और दूसरा क्या मौजूदा पाकिस्तान को किसी एक, जैसे आपने कंपोजिट कल्चर की बात की, और मतलब इस क्लाइमेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए भी सर, क्या हम पाकिस्तानी कल्चरल का कोई एक कंपोजिट थ्रेड, कोई ऐसा यूनिफाइंग फोर्स, कोई ऐसा कॉमनैलिटी उसे ट्रेस कर सकते हैं, और नैरेटिव ऑफ द सोसाइटी एंड नैरेटिव ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए सर? आप देखिए, I don't think we'll be able to see in close proximity so much variety in nature as we see in Pakistan. Sir. I think if you want one word, it was mutual respect and coexistence. These are the two themes that I could generate from this culture or cultures of Pakistan. That, you know, next door is desert. On the other side are mountains. This side is dry land. This side is fertile land. Oh, beyond there are lush green mountains. No, look towards your south and west.
dry as rock mountains. What is this? If nature in so many shapes and colors could coexist in an area, we can do also. We can also. This is the greatest indication of nature, that if I could put you up in so many different colors, heights, lows, dry area, flooded area, fertile area, absolutely area which doesn't grow anything, then there has to be some reason for that. And that reason is that people who live in those areas, they can also coexist and have mutual respect and appreciation. So Pakistani culture stands for this, at least in historical perspective. It stands for appreciation of all cultures of the world. It stands for respect for all cultures of the world. And it stands for respect for dignity and respect to all those ideas generated in this land, whether in terms of different religions or in terms of different ethnicities. बिल्कुल ठीक, बहुत मजे सर। दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात थे जो सर आपकी गुफ्तगू में ऑटोमेटिकली एड्रेस भी होते गए। उसमें बाकी जो कोई ऐसे क्वेश्चंस रह जाएंगे सर, उसे हम किसी कमिंग सेशन में ले लेंगे। और ये जो पर्सपेक्टिव है सर, यानी हमें सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही तारीख को नहीं समझना, तारीख को इसके सही मानों में समझने के लिए हमें इसके सोशल और कल्चरल डिस्कोर्स में भी जाना होगा। जैसा कि वो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखने का, एक हिस्ट्री को देखने का एक अलग से एंगल है। तो इसके साथ ही मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए ये इतना अहम मौजू इतनी खूबसूरती से और आसानी से एक्सप्लेन किया सर, कि हमें थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। और बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे साथ शामिल थे। बस इस दरख्वास्त के साथ कि आप इस प्रोग्राम को जहाँ तक हो सके इसकी तरवीज करते जाएं। और अगला जो है वो हम प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हिस्ट्री के मुख्तलिफ डायमेंशंस पे जाने से पहले हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करते हुए आएँ, और फाइनल पे फिर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे आएंगे। तो अगला जो होगा हमारा, मोस्ट प्रोबेबली हम यूरोपियन हिस्ट्री को टेकअप करेंगे। और सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमें अगले हफ्ते ज्वाइन करें। इंशाल्लाह यूरोपियन हिस्ट्री से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें।